Yeah, so if you see 0 0 1 1 is there, so the next number is again 0, and we have a non-terminal symbol s. So s is giving 0b, so you can substitute that 0b using this production. 0b likha, so usse 0 aa gaya, so we got 5 digits as it is. Next again there is 1, so again over here you cannot substitute only 1 because the string will end and we have more to go. So you will, what you will substitute is again 1s. So you will substitute 1s over here. So 1s substitute किया, so if you see 0 0 1 1 0 1, so 0 0 1 1 0 1 आ गया. अभी लास्ट 0 1 बाकी है. So again 0 है, so you will take s tends to 0b, so s की जगह पे 0b, so ये इतना आ गया. एंड लास्ट में अभी सिर्फ अपने को 1 चाहिए. So we know that b gives production 1, so using that production rule b gives 1, so b के यहाँ पे 1 substitute किया. So see, ये जो स्ट्रिंग था वही स्ट्रिंग यहाँ पे अपने को मिला है, which means that the given string belongs to that grammar. मतलब from the given grammar it is possible to derive the string which was given in the question. So last में that's why we say that this string belongs to the given grammar. This is the next example over here. These are the string which generate strings a a b b b. So let us start with this because we are having only one start symbol. So s gives a a b, ये जो starting में production rule है वही use किया है. Now the next symbol is again small a, so a का production this a a b should be used क्योंकि उसी से small a मिलेगा. So ये a as it is, instead of this a, using this production I have substituted this b I have written as it is. Next if you see a a हो गया, b b हो गया, a के बाद सीधा भी b चाहिए, so I can put this as epsilon. So if you put this as epsilon, you see that the string is ended over here और एक और b मिलना impossible है. So that was one case. Another case is where over here instead of epsilon you can put again same production rule a a b. So ये एक, जैसे ये a की जगह पे ये रूल डाला है, similarly ये a की जगह पे वही रूल डाला है, and then you put epsilon. But if you see you are getting 3a and 3b's. So यहाँ पे क्या है, 2a 3b's चाहिए. So यहाँ पे 2a 2b's है, यहाँ पे 3a 3b's है, which means how much ever you try to derive it, you are not going to get the string you need. So it simply says that this string does not belong to the given grammar. So this is how you determine by sentential form derivations that whether a given string belongs to a particular grammar or not. So I hope that is clear. There is no doubt in that. The next we study is the parse tree. Any parse tree is nothing but derivation, again same thing but in the form of trees. See, it is an ordered rooted tree that graphically represents the semantic information of strings derived from a CFG. तो जो हम सेंटेंशियल फॉर्म में करते थे वही चीज करना है, जस्ट अभी हमें पार्स ट्री के फैशन में यानी ट्री के डेरिवेशन में करना है. इसमें सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज रूट विल ऑलवेज बी द स्टार्ट सिंबल. रूट पे हमेशा स्टार्ट सिंबल रहेगा. वर्टेक्स नॉन टर्मिनल सिंबल्स, लीव्स पे ही एप्सिलन्स रहेगा, यानी स्टार्ट सिंबल हमेशा रूट पे. इन बिटवीन वर्टेक्सेस जो भी रहेगा जिसके आगे और ब्रांचेस है वो सब नॉन टर्मिनल रहेंगे. और लीफ नोड यानी जो भी लास्ट नोड रहेंगे लीफ नोड पे दैट विल बी ऑल टर्मिनल सिंबल्स और एप्सिलन. For example, you see s gives 0b, so s gives 0 and b, so this is the last क्योंकि टर्मिनल सिंबल आ गया है. We also have b gives 0 a, so b gives 0 a and a. And we also know that a gives 1 a, so you will have this a gives 1 a and a, that's it. उसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे a gives epsilon. तो जितने भी a's बचे हैं यहाँ पे you have to give that as epsilon because your vertex root cannot be the leaf node. vertex हमेशा in between होना चाहिए, leaf पे हमेशा या तो terminals होने चाहिए या फिर epsilon होने चाहिए. Let us have a clear example. Now, before starting with that example, see the parse tree. When you derive the parse tree, you can have two types of derivation: the leftmost derivation and the rightmost derivation. The leftmost derivation is obtained by applying production rules to the leftmost variable in each step, whereas the rightmost is obtained by applying the production rule to the rightmost variable in each step. यानी सिंपल है, अगर लेफ्ट साइड का डेरिवेशन है
तो आप हमेशा सी these are the two nodes right now, but since this is the terminal symbol you cannot expand it. ये non terminal है, इसके लिए आपको expand करना पड़ेगा. Similarly यहाँ पे if we consider this is not in consideration. ये दोनों में से अभी लेफ्ट डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले इसका एक्सपांशन होगा, राइट डेरिवेशन के हिसाब से करते हैं तो सबसे पहले इसका एक्सपांशन होगा. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो लेट अस सी दैट विद एन एग्जांपल. Excuse me. Yeah. The leftmost derivation for the given grammar. So if you see, इसको इन डिटेल में करना है. Just because this is the first example, I have done it in the single tree. It says S gives A and S, and S also gives A, S, and epsilon. So we'll start with S gives A, S, because we can substitute it more over here. So S gives A, S. Now since this is the leftmost derivation, तो ये terminal तो आ गया. अब ये दोनों बचे हैं, तो इन दोनों में से this is the left, this is the right. Because you are going for leftmost derivation, we'll select this S. Now we also have S gives A, S. So S gives A and S. Again ये terminal आ गया, ये दोनों बचा है. So this is the leftmost tree. So we have S, B and A. Sorry, A gives S, B and A. But that is not what we are taking. We'll be taking S gives B, A. So A is giving B and A. Again over here S यहाँ पे है. So if you see S के लिए we can again substitute as A, S. So it is giving A, S and S. And then finally we are having epsilon symbols over here at the last. So we are getting over here A, B, A at the end. So this is the derivation for the string. See, for generating string A, B, A, this is the given grammar. So we have to make sure कि अपने पास A, B, A ही आए. तो वो कैसे आएगा? Starting symbol is A. So I can take A, S. So I have taken A, S. The next symbol is also A. So इसके लिए S के लिए हमें क्या लेना पड़ा? A, S लेना पड़ा. So A, S. The next symbol is B. So we'll take A. B कब मिलेगा? जब हम ये वाला डेरिवेशन डालेंगे. So A is B, A over here. So A, B, A आ गया. अभी एक और A बाकी है. So because एक A बाकी है, so we are taking over here S as A, S because वहाँ से S is giving epsilon but A is not giving any epsilon. So we have taken A, S because S is giving epsilon's values. So we have got A, B, A from the left derivation. अब इसी चीज का right derivation करना है. So right derivation में भी हम क्या करेंगे? पहले A, B, A यही string मिलना चाहिए. So A, S obviously the first rule because A is there. Now left right है. So because it is rightmost derivation हम ये सिलेक्ट करेंगे. लास्ट एग्जाम्पल में लेफ्ट था, इसके लिए ये सिलेक्ट हुआ था. राइट डेरिवेशन इसके लिए ये सिलेक्ट करेंगे. सेकेंड स्ट्रिंग शुड ऑल्सो बी A. सो इट इज A, S. देन A हो गया. अभी B चाहिए तो A के जगह पे BA. यूजिंग दैट प्रोडक्शन रूल वी आर गेटिंग BA. सो इफ यू सी वी आर गेटिंग A, BA. अगेन S के जगह पे A, S. राइट मोस्ट डेरिवेशन है. So A, S लेना चाहिए. Epsilon and epsilon over here. So again this is the simplest rightmost derivation tree. So this is how you can derive a derivation tree. यानी sentential form में भी कर सकते हो आप और ये form में भी कर सकते हो आप. If any doubts please let me know.